Very good morning, dear students. Today, we'll start reading a very interesting novel of 20th century, which title is Goodbye, Mr. Chips. This novel is being written by James Hilton, who's a very famous novelist of England, and he wrote this internationally renowned and the bestseller novel, Goodbye, Mr. Chips, in 1934. This novel is a story of a teacher, Mr. Chippings, who is old the moment we start reading the novel. नॉवल के आगाज़ में उनको बहुत बुरा दिखाया गया है. And the novel shows how a teacher like him was devoted and conscientious, as well as a very humorous person. He was a teacher who truly won the hearts of his students. इस नॉवल में आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से ब्रुकफील्ड स्कूल में अपने शब रोज़ डॉक्यूमेंट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि नॉवल बेटे कहते किसको हैं. हम कहते हैं द नॉवल इज़ अ लॉन्ग स्टोरी विद वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, अ नंबर ऑफ सेटिंग्स एंड लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स. एक लंबी स्टोरी जिसमें बिकॉज़ वो लंबी है तो आप उसमें बहुत सारे सिचुएशंस प्रेजेंट कर सकते हैं. डिफरेंट सेटिंग्स हैं, यानी मुख्तलिफ जगह पर वाक़यात उसके होते हैं, और इसी तरह उसमें कैरेक्टर्स भी ज़्यादा होते हैं, जो एक नॉवल को एक शॉर्ट स्टोरी से डिफरेंट बनाते हैं. अब आते हैं हम इस नॉवल के कैरेक्टर्स की तरफ. 18 चैप्टर्स पर ये नॉवल कंसिस्ट करता है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. हम इब्तदा में जिन कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले तो आपके पास आ जाते हैं मिस्टर चिप्स, अ हैंडसम यंग मैन व्हेन ही जॉइंड ब्रुकफील्ड. His real name was Chipping, but students started calling him as Mr. Chips. He graduated from Cambridge University. He developed himself as an ideal teacher gradually. He became a very popular teacher among his students. The second main character of our novel is Catherine Bridges, who was wife of Mr. Chips. दो इस नॉवल में कैथरीन ब्रिजेस का पार्ट बहुत थोड़ा है, बट द चेंजेस शी हैज़ ब्रॉट इनटू द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स आर नोटवर्दी. इस तरह से कि हमें लगता है कि जैसे कैथरीन ब्रिजेस इस नॉवल में ना होते हुए भी थ्रू आउट मिस्टर चिप्स के साथ मौजूद है. द वे ही रिकॉल्स हर एंड द वे ही डॉक्यूमेंट्स हिज मेमोरीज, शी बिकम्स अ constant part of the novel. She was Mr. Chips' young wife, whom he marries at 48. She is very popular with the boys. She dies in childbirth along with her infant son. Katie showed us how to enjoy life, share joy and laugh. तो जो तब्दीलियाँ मिस्टर चिप्स के अंदर आएंगी, जो हम इस नॉवल में देखेंगे, उनकी एक बड़ी वजह कैथरीन ब्रिजेस थी. Dr. Merivale, who was Chip's physician, mean Chip's doctor, he checks his health on a bi-weekly basis. He keeps checking on him. Novel के start में Chips is an old man who's been retired from his school. That is why he needs checkup from doctor, and Dr. Merivale does him the service. Mrs. Wickett is Mr. Chips' landlady. Mr. Chips lives in Mrs. Wickett's house across the road near the school, and he lives with her after his retirement. Mrs. Wickett, who's not only kind with Mr. Chips, but also very caring and concerned for his health.
You will get to know Cole, the very first student of Mr. Chips who got punishment from him. A Brookfield boy whom Mr. Chips disciplined on his first day at the school. Cole's son and grandson later become pupils of Mr. Chips. And at the beginning, you will get to know about Mr. Weatherby, the head of Brookfield, when Mr. Chips joined the school. इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस नावल में सिग्निफिकेंट हैं, तो हम जैसे जैसे इस नावल को रीड करेंगे आप उनके बारे में जानते जाएंगे. इस नावल की थीम्स क्या हैं? द वेरी इंपॉर्टेंट इज डिवोशन ऑफ अ टीचर. द नावल शोज हाउ टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन and the writer has expressed the theme of teaching throughout the character of Mr. Chips. It also shows the relationship between teacher and student. The novel tells us that a teacher not only remains strict, but he can also give a new life to his teaching via his attitude and his behavior with the students, and that is the only way that an eternal teacher like Mr. Chips can win the hearts of his students. This novel also shows how memories are important in making a person's life. ये memories हमें present की जाती हैं मिस्टर चिप्स के कलम से. नॉवल के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स is sitting on his writing table and he's documenting his memories. वो अपनी याददाश्त तहरीर कर रहा है. स्कूल में उसने कैसे दिन गुजारे, क्या शब रोज़ थे, कैसे माहो साल थे, उनके बारे में वो लिख रहा है और इस तरीके से वो अपनी तमाम चीज़ों को दोहराता रहता है, उन्हें याद करता रहता है. Another important theme of the novel is a comparison between youth and old age. आप थ्रू आउट नावल में कंपैरिजन देखेंगे. फ्लैशबैक्स की सूरत में है ये नावल कि मिस्टर चिप्स अपने आप को जवान तस्वुर करता है, याद करता है कि अपनी जवानी के दिनों में वो क्या करता था, एंड देन कैमरा शिफ्ट्स और हम उसको देखते हैं कि वो अपनी स्टडी टेबल पे अपने बुढ़ापे में बैठा उस याददाश्त को तहरीर कर रहा है. इसी तरह स्कूल के बच्चे और मिस्टर चिप्स हु इज़ एन ओल्ड ऑल्सो प्रेजेंट अ कंट्रास्ट. तो ये यूथ एंड ओल्ड एज का जो कंट्रास्ट और कंपैरिजन है थ्रू आउट आप नावल में देखेंगे. नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. कॉन्टीन्यूस एक तबादला होगा कि पहले ज़िंदगी कैसी थी और अब इस वक्त ज़िंदगी किस तरह की है और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, आप उस नावल में असेस करेंगे. अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नावल इज़ द चेंज. हम ये चेंज देखते हैं जो डिफरेंट लेवल्स पर आया है. आप मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में भी तब्दीली देखेंगे. यू विल विटनेस हाउ ही इवॉल्व एज अ पर्सन. एक इंसान के तौर पे वो कैसे बदला. यू विल नोटिस दिस चेंजेस इन हिम एज अ टीचर. एज अ टीचर वो किस किस तरीके से उसने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया. उसके साथ साथ आप ये चेंजेस देखेंगे लोगों के लाइफ पैटर्न में भी. आप एक सोशल चेंज भी यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लैंड की लाइफ में लोगों के सोशल सेटअप में किस तरीके से तब्दीली आना शुरू हुई, और उसके साथ ही आप ये विटनेस करेंगे कि उस तब्दीली का स्कूल पर और लोगों की मेंटालिटी पे क्या इफ़ेक्ट हुए हैं. एक और चीज़ जो कांस्टेंट एलिमेंट इस नावल में रहेगा दैट इज़ वॉर. फ्रैंको प्रेशियन वॉर यानी फ्रांस और जर्मनी की वॉर का टाइम है इस नावल में जो आप ऑब्जर्व करेंगे. यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में लिखा गया है ये नावल. तो जिस तरीके से वॉर थीम बार बार इस नावल में आएगी तो उससे भी हमें पता चलेगा कि वॉर कैसी रही और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ लोगों की ज़िंदगियों पे. यानी वॉर ने भी एक मेजर रोल प्ले किया इस नावल में चेंज की थीम को दिखाने के लिए. The novel has been adapted to screen many times. That means कि इसको टीवी पर और फिल्म की सूरत में बहुत बार इसको ड्रामेटाइज किया जा चुका है. Before starting reading of the novel, we'll kickstart our reading by watching a clip from the dramatization of this novel so that you could assume yourself
as one of the character and enjoy the pleasure of reading. It's all right, Mrs. Wicked. I'm awake. Yes, sir. Nice and clean, good chapel. Think. So, this was your first introduction to Mr. Chips and Mrs. Wicked. Let's read out the novel. When you are getting on in years, but not ill, of course, you get very sleepy at times. When you are getting on in years, इसका मतलब है जब आप बूढ़े हो रहे हों, जब आपकी ज़िंदगी के साल बढ़ रहे हों. Not ill, of course. बूढ़े हो रहे हैं, बीमार नहीं. You get very sleepy at times. आप बहुत गनूदगी महसूस करते हैं. And the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. और आपके घंटे इस तरह गुजरते हैं जैसे लेजी कैटल, जैसे सुस्त रफ्तार मवेशी किसी लैंडस्केप के पास से गुजर रहे हों. आपने क्लिप में देखा जिस तरह मिस्टर चिपिंग was dozing off and Mrs. Wicked enters into the room and wakes him up. Was he dreaming or he was daydreaming? That is the question. क्या मिस्टर चिप्स वाकई सो रहा था या वो याद कर रहा था अपने तमाम गुजरे हुए दिनों को? It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened. मिस्टर चिप्स के साथ ऐसा ही हो रहा था तब से जैसे ही ऑटम टर्म जो स्टूडेंट्स का तालीमी दौरानिया है प्रोग्रेस्ड वो बड़ा था, दिन छोटे हो गए थे till it was actually dark enough to light the gas before call over. यहाँ तक कि कॉल ओवर से पहले, हाज़िरी से पहले गैस चला के रोशनी करना ज़रूरी हो जाता था. अब आप देखिए बेटे कि नॉवल के स्टार्ट में ही आपको जो इंट्रोडक्शन दिया गया है मिस्टर चिप्स का वो स्कूल के हवाले से दिया गया है. इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स और स्कूल लाजमो मलजूम हिस्सा हैं इस नॉवल का. ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इंडिस्पेंसिबल पार्ट हैं दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड. For Chips, like some old sea captain, still measured time by the signals of the past. चिप्स एक ऐसा इंसान था जो किसी पुराने समंदरी कप्तान की तरह मेजर्ड टाइम, अपने माजी का पता चलाता था, अपने माजी को मापता था बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, जो अपने वक्त को माजी के इशारात के साथ लेके चला करता था. यानी उसकी मेमोरीज़ को रिफ़र किया जा रहा है कि वो अपने वक्त को हमेशा पीछे लेके जाता है और उसके साथ रिलेट करता है. एंड वेल ही माइट, फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स जस्ट क्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल. ही माइट, और वो ये काम कर सकता है क्योंकि उसकी रिहाइश स्कूल के सामने वाली सड़क के पार मिसेस विकेट के घर में थी. सो यू गॉट टू नो कि स्कूल से रिटायरमेंट के बाद भी when Mr. Chips is old enough, he didn't physically separate himself from the school. Rather, he lives across the road at Mrs. Wicket's house, ताकि वहाँ से वो स्कूल को और उसमें होने वाली ज़िंदगी को देख सके और उस रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल का एक पार्ट रहे. He had been there more than a decade. जिस वक्त आपका नॉवल शुरू होता है हमें पता चलता है कि वो पिछले 10 साल से वहीं पे रह रहा है. एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, तब से जब उसने अपनी मास्टरशिप, अपनी टीचिंग को फाइनली गिव अप किया था, यानी खैर बात कहा था. एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट. और
वो और मिसेस विकेट जो हैं वो ग्रीनविच के टाइम से कहीं ज़्यादा ब्रुकफील्ड का जो टाइम है यानी स्कूल में जो घंटी बजती है उसके टाइम को ज़्यादा फॉलो करते हैं. मिसेस विकेट, Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. Mrs. Wicket. Chips would sing out. Chips आवाज़ देगा. In that jerky, अपनी उसी लड़खड़ाती हुई, अपनी उस shaky, high-pitched, एक कड़कदार आवाज़ में, जोशीली आवाज़ में. That had still a good deal of sprightliness, जिसके अंदर अभी तक काफ़ी अच्छी बशाशत थी, जिसके अंदर जोश बाकी था, जो अभी भी अलाइव है. उस आवाज़ में वो मिसेस विकेट को पुकारेगा. You might bring me a cup of tea before prep, will you? क्या प्रेप का पीरियड शुरू होने से पहले आप मुझे चाय की एक प्याली ला के देंगे? सो रिमेंबर, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हमारे नॉवल के, ये स्कूल में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि उनकी ज़िंदगी स्कूल बेल के साथ शुरू होती है और उसी को फॉलो करती है, उनके घर के क्लॉक पर नहीं चलती. सो इसीलिए मिस्टर चिप्स किस तरीके से मिसेस विकेट से चाय मांगते हैं? प्रेप का पीरियड शुरू होने से पहले, यानी प्रेप की जो बेल होगी, क्या उससे पहले आप मुझे चाय ला के देंगी?